let me on the recording. Okay, sorry. Uh, greatly amused by the girl's way of speaking, ये जो छोटी बच्ची जिस तरह से बोल रही थी, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. But तुम्हें अभी शहर में अकेले जाने में डर लगता है, तो यहाँ टाउन तक अकेली शहर में आ गई आप बस में, तो उसमें डर नहीं लगा? Nothing to be afraid of about that, she answered. उसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है. Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? तो फिर why not go to that stall? Okay, here the conductor is not asking any questions. It is one type of expression that is used in spoken English. Why don't you come with me? Then means I am not asking you whether you are coming with me or not, but I am suggesting that you should come with me. Here, in the same way, the conductor is suggesting the girl that you should go to that stall because then there you will get some drink, cold drink, and have something to drink. Nothing to be afraid of about that either. उसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है. आप वहां जाके कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लेते? Oh no, I couldn't do that. Here we can understand that Valli is quite wise enough. She understands everything, that it is not proper to take things from stranger. Of course, the conductor was talking politely. Okay, she was helping the little girl, but the girl knew everything about the world, how the world around her. Perhaps her mother had taught her how to behave with stranger. That's why she denies here and says that, oh no, I couldn't do that. मैं नहीं ले सकती. Well then, let me bring you cold drink. ओके, आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मैं वहां जाता हूँ और आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ. नो, आई डोंट हैव इनफ मनी. मेरे पास नहीं है मनी. जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. आई हैव जस्ट 30 पैसे, मुझे मेरी टिकट दे दो और बस इतना ही. Then conductor offered her that it would be his treat and not cost her anything. It would be her treat. That means conductor himself would pay the money for the girl. Okay, and the girl has to take only cold drink. She had to accept the cold drink from the conductor. She offered her that cold drink. No, no, she said firmly. Sometimes in indirect speech, such paragraphs are asked, and at that time students get confused. Sir, what to do here? No, no, she said firmly. Please, no. Can anybody convert this sentence into indirect speech? No, no, see. If you have noticed that I have been already speaking some sentences into indirect speech. No, no, she said firmly. Please, no. How would you convert them? If any students can try it. Sir, She firmly denied it. Whenever there is repetition of certain words, you can use. Okay, here no has been repeated, so you can use Valli repeatedly refused. Valli repeatedly refused and requested not to give her cold drink. Not to give her cold drink. किसका मैसेज आया? ओके, जाने दो. No, no, she said firmly. एक मिनट. सहज चौहान, जिसका भी अकाउंट है अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. सहज चौहान. yes, sir. Yes, sir. सहज चौहान, please unmute yourself. Yes, sir. Yes, sir. जैनिश पोकिया, अनम्यूट करो अपने आप को. आवाज नहीं आ रही है सहज आपकी.
क्यों लेट के हेलो हाँ सर, मेरा दूसरा ट्यूशन होता है इसके लिए। ओके। फिर जेनिश पोकिया, जेनिस पोकिया अनम्यूट करो अपने आप को। सर फोन चार्जिंग में रखा था। बेटा हर बार प्रॉब्लम होता है, एवरी वीक यू हैव द प्रॉब्लम, हर बार चार्जिंग में होता है। कहो तो स्क्रीनशॉट भेजू आपको, चार्जिंग में है। मतलब बेटा चार्जिंग कर दो, मैं इंस्ट्रक्शंस भी लिखता हूँ याद कराने के लिए, बेटा वो बात हाँ नहीं है। हाँ सर, चार्जिंग में था और मैं 2 बजे से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई अंदर ही नहीं दे रहा था। हाँ तो आफ्टर 2 o'clock तो मैंने मना किया था, तो कोई बात नहीं, चलो अभी। आप ध्वनि, ध्वनि अनम्यूट करो अपने आप को। ध्वनि अजाकिया। यस सर। क्यों बेटा, आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो, एवरी लेक्चर यू आर लेट। ध्वनि, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर मुझे आज याद नहीं रहा इसलिए। याद नहीं रहा, यू आर केयरलेस, दैट इज वाई। ओके, आपको आप में इतनी केयर ही नहीं है कि हम पंक्चुअल रहे। टेक केयर नेक्स्ट टाइम। हाँ सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ओके। Okay, sorry to interrupt you. No, no, she said firmly, please no. Here the conductor denied repeatedly, sorry, here the girl denied repeatedly or refused repeatedly and requested not to give her any cold drink. The conductor shrugged. Shrugged मतलब अपने shoulders ऐसे बोलते हैं ना, किसी को हम कुछ ऑफर करते हैं बार बार और वो नहीं लेता तो हम shoulders को ऐसे हिलाते और फिर बोलते हैं जाने दो कोई बात नहीं। And they waited until it was time for the bus to begin the return journey. और दोनों लोग वेट करने लगे जब तक कुछ टाइम था उनके पास, शायद 15 या 20 मिनट्स का, उनकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाए। अगेन देयर वेरंट मैनी पैसेंजर्स, दूसरी बार वहां बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली save up money for her first journey? Was it easy for her? ओके बोलिए। ये लेट कमर्स है ने, आई डोंट लाइक टू पनिश और स्कॉल्ड एनीबडी, मगर ये अच्छी बात नहीं है, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है आप 2-3 स्टूडेंट्स की वजह से, सो प्लीज टेक केयर नेक्स्ट टाइम। ओके, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वाज इट इजी फॉर हर? वल्ली ने कैसे अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे बचाए, क्या उसके लिए Sir, वो? may I? यस। Valli save up money for her first journey. By resisting her every temptation of buying toys, balloons, etc. And she also collected. try. Yes, she saved some money from it, and she also didn't enjoy the rides which were in the village fair, and that's how she saved Okay. the money. Okay, one thing you missed, Stuti, that was she collected stray coins from the house. That was also the point. That was I was explaining in the beginning. Not आप जब भी question answer learn करो तो उसमें कौन से points है वो learn कर लो. Stray coins वाला point था उसमें. Okay. Next question. Good. What did Valli see on her way that made her laugh? रास्ते में वल्ली ने क्या देखा जिससे वल्ली को हंसी आ गई? बोलो। Can I? Yes. A young, a young cow, a young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. Okay. Somewhere this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes.
Okay, when the driver saw that the young cow was coming in front of the bus, she honked it again and again. But the cow didn't listen. She got more frightened. She became faster even before. She galloped and directly came in front of the bus. Valli found it very much funny. Okay, very good, Zil Dalsania. Zil Dalsania, you have submitted your paper. Then why did you send PDF? आपने पेपर तो सबमिट करवाया था, वो मुझे मिला था, फिर पीडीएफ भी क्यों भेजा दूसरी बार? सर मैंने पीडीएफ पहले भेजा था, फिर है ना उसके 2-3 दिन बाद पेपर सबमिट किया था, मैं बाहर थी ना इसीलिए। ओके, थर्ड वन, why didn't she get off the bus at the bus station? ये तो बहुत इजी आंसर है। Sir, यस, Valli didn't get off the bus at the bus station because she wanted to go back to her village from that same bus. ओके, एंड अनदर मैटर वाज, एक पॉइंट दूसरा भी था, वो इंडिकेट था अंदर, शी वाज परहैप्स अफ्रेड टू गेट ऑफ द बस अलोन, शी वाजंट क्वाइट मैच्योर्ड ऑफ, दैट्स व्हाई। फिर दूसरी कोई बात रह गई हो, किसी को याद आती हो तो बोलिए, क्यों बस के नीचे नहीं आई वो? यस, यस सोनी, And बोलो। and she even didn't have any money to buy anything for her. Also, people think that if you wait in the bus for 15 minutes, she can go through the same bus. ओके, ओके, ये भी ऐड कर सकते हो, नो इश्यू। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? That answer is called inferential question. That means you have to write points yourselves, you have to write sentences yourselves. You will not get the answer directly from the text, but indirectly from the text description. मैंने भी लास्ट एग्जाम में एक लास्ट वाला आंसर रखा था, मगर उसमें सारी टेक्सचुअल स्टोरी लिख दी जिन लोगों ने, उन लोगों को मैंने हाफ ही मार्क्स दिया, मेन बात तो उन्होंने लिखे ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन था वो 7 वाला। ये भी ऐसा ही है, क्यों वल्ली स्टॉल में जाके ड्रिंक लेना नहीं चाहती थी? क्या आपको उसके बारे में पता चलता है? परहैप्स वल्ली वाज, यस बोलो, यस सोनी। Wally was afraid of getting out of the bus, and also she didn't had any money. We know about this that she might have only got 60 pesos for Okay, her travel, and she only wanted to travel in the bus, so she didn't came out of the bus and get to the stall okay, for a drink. okay. Wally's intention was only to ride to the town and back to the village. She didn't include any other thing in her plan. Okay. Second thing was, she was wise enough to know that it was not proper to accept anything from strangers. So perhaps she might have refused to take cold drink or to go to the stall and have a drink. ओके, एंड अनदर जो बात आपने बताई वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, शी हैड ओनली 60 पैसे, शी ऑलरेडी हैड स्पेंड 30 पैसे when she came down, and now she had to return down by spending the rest of the 30 paise. She had a good self control over her not to accept anything from any strangers in the world. That's why. Okay, good. For the students who have given their answers. Part 4, and that's the last part. Perhaps, won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. Now the conductor knew why the girl was alone in the bus, what was her intention, what was her planning. So conductor asked her, won't your mother be looking for you? क्या तुम्हारी मम्मी आपके लिए
इंतजार नहीं करती होगी? कंडक्टर ने उससे पूछा जब उसने उसको बच्ची को टिकट दी। नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सॉरी, मेरे लिए कोई इंतजार नहीं करेगा। शी सेड द बस स्टार्टेड। बस वहां से टुक ऑफ, वहां से स्टार्ट हुई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, एंड सेम वंडरफुल साइट्स शी अगेन ट्राइड टू एंजॉय. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement and she had felt the first time. वल्ली थोड़ा सा भी बोर नहीं हुई थी. Her greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और हर एक चीज जो पहली बार देखती थी जिसमें उसे she was excited very much, she was greeting everything with the same excitement. But suddenly, what happened? Suddenly, she saw a young cow lying dead by the roadside. The young cow that made her laugh when she was traveling from village to town. The same cow was now lying dead on the roadside, by the roadside. This sight shocked him very much. Just where it had. Okay, let me dot down these students' name who are leaving the meetings. Rishabh. Okay. The bus started, and again there were the same wonderful sights. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. ओके, कुछ व्हीकल के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था वहां पर, तो वो वहां पर थी, मर गई थी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. कंडक्टर से पूछा वल्ली ने, क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमारे बस के सामने आ गई थी जब हम टाउन आ रहे थे? ओके, हर्ष व्यास. ओके, let me note down his name for living. Okay. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? जस्ट वेट, मुझे अच्छी तरह से नाम लिख देने दो. ये लोग जो लोग मीटिंग से जा रहे हैं तो आइदर दे विल राइट 5 times or will not come tomorrow science lecture and English lecture. सर मैं तो नेटवर्क की वजह से निकला था, मैं प्लीज ज्वाइन होता है देखो ना. अच्छा, वापस आ गए आप? सर ओके. मुझे पता नहीं चलता एक प्रॉब्लम एक ही स्टूडेंट्स को क्यों बार बार होती है. लेट आना तो वही स्टूडेंट्स को लेट हो जाता है, निकल जाना नेटवर्क की वजह से तो सेम स्टूडेंट्स को, बैटरी चार्ज नहीं थी सेम स्टूडेंट्स को, बाकी के स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम से नहीं होता. एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट. हुआ. ओके. Okay, the conductor nodded and she was overcome with sadness. Conductor ने nodded means only gestures, not to say anything, say yes or no, that is called nodded. ऐसे मुंह हिला के हाँ या ना कहना, that is called nodded. And she was overcome with sadness. Okay, overcome का meaning होता है जीतना, मगर यहाँ क्या है, overcome with sadness. वो her happiness suddenly turned into sadness. What had been? क्या वजह थी, क्या रीजन था? And that's also part of one of your answers. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. थोड़ी ही मिनट्स पहले जो बहुत ही लवेबल था, ब्यूटीफुल था, ऐसा एनिमल सडनली ऐसा क्या हो गया कि उसने अपनी जिंदगी खो दी और कितना हॉरिबल लगता था. That cow looked so lovingly just minutes before, okay, when she was traveling to the town, but the same scene now was looking horrible, so frightening. It lay there, वो वहां मरी हुई थी, कितना फ्राइटनिंग लगता है. लेग्स स्प्रेड ईगल, उसके जो लेग्स थे, एक्सीडेंट इतना बुरी तरह से हुआ था क्योंकि वो रोड पर दौड़ रही थी, तो उसके लेग्स थे वो सारे फैले हुए थे रोड पर.
a fixed stare in its lifeless eye. उसकी आंखें खुली थी. That's why here it is written as fixed stare in its lifeless eyes. Blood all over. Blood was spread all over the road. Okay. The bus moved on. बस आगे बढ़ी. मगर जो वल्ली थी उसका जो दिमाग था, her memory still there at the side where the cow was lying dead. The memory of the dead cow haunted her. Haunted. Perhaps you might have listened what is called haunted. That's also belong to one of the name of the film Haunted. जो आप आपके दिमाग में से निकालना चाहो तो भी नहीं निकले, ओके, तो उसको बोलेंगे haunted. Return, okay, here return its meaning. Return repeatedly to her mind was impossible to forget. जिसको आप भूलना नहीं चाहते वो haunted कहलाता है. तो मतलब हमने हॉन्टेड वर्ड किसके साथ जोड़ दिया है? घोस्ट के साथ, भूत के साथ. उनके रिलेटेड जो होते हैं उनको हम हॉन्टेड बोलते हैं क्योंकि वो दिमाग से नहीं निकल जाता एक बार डर जाते हैं तो. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. और dampening मतलब down हो रहा था उसका enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. Now she didn't want to enjoy the scenery outside the window. She sat thus glued to her seat. वो अपनी सीट पर बैठी रही until the bus reached her village. जब तक उसकी बस अपने विलेज में गई at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, फिर वो कंडक्टर की ओर गई और बोली, well sir, I hope to see you again. Okay, now she was quite polite. She told the conductor that okay, we will see you again. फिर से मिलेंगे. Okay madam. Now conductor made her used her sense of humor, his sense of humor again. कि okay madam. He answered her smiling. Whenever you feel like a bus ride, come. जब भी बेटा आपको ऐसा लगे कि मुझे बस राइड करनी है, come and join us. हमारे साथ आ जाना. And don't forget to bring your fare. और बस की टिकट के लिए पैसे लाना मत भूलना. She laughed and jumped down from the bus. वल्ली हंसी, बस में से निकल गई. Then away she went running straight for home. फिर वो वहां से चली गई, सीधी घर पर गई वहां पर. When she entered her house, जब वो अपने घर में गई, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. What was the scene here? Her mother was awake. Her afternoon nap was over. She was awake and talking to one of Wally's aunt. And how was the nature of that aunt? उनका नेचर कैसा था? कहाँ रहती थी वो? The one from South Street. Okay, she belonged to the South Street. This aunt was a real chatterbox. चैटरबॉक्स किसे बोलते हैं? जिससे बहुत ही बातें करने की हैबिट हो, जिसका मुंह बंद नहीं हो बातें करते हुए, उसको हम चैटर बॉक्स बोलते हैं. शायद हम एक लेसन पढ़ गए चैटर बॉक्स वाला. चैटर बॉक्स की वजह से उसको सर Diary from the NFM. यस, And that चैटर बॉक्स की वजह से सर ने उससे जो पनिशमेंट दी थी वो. ओके ओके. शी लाफ्ड. Okay, हो गया है. Awake and talking to one of Wally's aunts, the one from the South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth. और ये तो इतना बोलती थी, once she started talking, कि एक बार बोलना शुरू करे तो उसका मुंह बंद ही नहीं होता था. And where have you been? said her aunt when Wally came in. जैसे ही वल्ली घर के अंदर आई, उसने पूछा, कहाँ थी तुम? ओके, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर. ऐसा ही कैजुअली पूछा. यहाँ लिखा है देखो, शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. वो कुछ रिप्लाई को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन. वल्ली बस थोड़ा सा हंसी और वो उसकी मदर आंट उन्होंने दोनों ने अपनी कन्वर्सेशन चालू रखी. यस, यू आर राइट. उसकी मदर ने बोला, सो मेनी थिंग्स इन अवर मिड्स. मिड्स मतलब इन द मिडल ऑफ, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड.
हमारी दुनिया में और बाहर की दुनिया में, हमारी दुनिया में मतलब हमारे घर में, हमारे फैमिली में और बाहर की दुनिया में रोज कितनी सारी थिंग्स, कितनी सारी बातें होती है, कितनी कुछ हैपनिंग्स होती है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग? तो हर एक चीज के बारे में हमारे पास कैसे नॉलेज आएगा, हम कैसे जान सकते हैं ये सारी बातें? एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ओपन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी? और ऐसा भी होता है जब हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ थिंग्स के बारे में, तो भी हम उसको कंप्लीटली समझ नहीं सकते, कैन वी? ओ यस, ब्रीथ्ड वल्ली। वल्ली ने यहाँ सांस लेते हुए बोला ओ यस, हाँ। ओके, नाउ हियर शी पॉक्ड हर नोज। उसने बीच में बोला। ओके, दोनों उसकी मम्मी और आंट बात कर रहे तो बीच में बोला कि हाँ। तो उसकी मम्मी ने नोटिस कर लिया, उसने तुरंत पूछा व्हाट, आस्क्ड, क्योंकि अभी वल्ली को भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ था बस में। सडनली हर हैप्पीनेस वाज टर्न्ड इनटू सैडनेस बिकॉज ऑफ द सीन ऑफ दैट डेड काउ। ओके, व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज दैट यू से? उसकी मम्मी ने पूछा क्या बोला तुमने, क्या क्या अभी तुम क्या कह रही हो? ओ सेड वल्ली, वल्ली ने पूछा आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तुम जो अभी बता रही थी कि जो हम नहीं जानते, हमारे नॉलेज के बिना दुनिया में जो कुछ होता है उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल। चीट किसे कहते हैं? अ गर्ल वो लेक्स रिस्पेक्ट। ओके, गर्ल या बॉय, कोई भी बच्चा जिसमें बड़ों के साथ बात करने की रिस्पेक्ट नहीं होती, उसको हम CHIT चीट ऐसा कुछ बोल सकते हैं। जस्ट उसको तो बात करने की तमीज नहीं है, शी सेड हर आंट, जाने दो उसको। एंड एट लुक, और तो भी देखो तमीज नहीं है तो हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू हर कन्वर्सेशन। पॉक्स हर नोज मींस टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर, जिसको हमसे हमें कुछ लेना देना नहीं है उसमें टांग अड़ाना, बीच में बोलना। एट लुक हाउ शी पॉप्स हर नोज इनटू हर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वेर अ ग्रोन लेडी, जैसे अभी बहुत बड़ी हो गई है, एज इफ शी वेर मैच्योर्ड इनफ, इस तरह से बात करती है। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. वल्ली अपने बस हंसी, मगर वो हंसी किस लिए वो नहीं कहना चाहती थी उन लोगों को। ओके, बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, वाज देयर? फिर बाद में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ओके, जिया हैज लेफ्ट द मीटिंग, लेट मी राइट। ओके, she didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? Okay. Is Jia present or left the meeting? क्योंकि कुछ Yes, sir, I'm present. okay, fine. First one, what was Wally's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tells you this. वल्ली की deepest desire क्या थी? That answer has already been discussed. You would be able to write this, so I am not discussing. उसमें कुछ नया नहीं है, okay? And again it was repeated 2 or 3 times. In the short question it was also repeated. Okay? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, तो डिस्कस कर लेते हैं। उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी वो आपको पता है, मगर 2 मार्क्स की तरह लिखना है ये आंसर। उसकी मैं आपको PDF नहीं भेजने वाला हूँ, that you have to write yourself with your digest और with yourself। ओके, मगर डाइजेस्ट की हेल्प लीजिए, कोई बात नहीं, मगर पहले पढ़ लीजिए, बाद में अपने आप लिखे। डोंट मेक डायरेक्टली कॉपी डाउन योर आंसर्स। और आज मैं एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन भेजने वाला हूँ आपको। ओके, 2 पेज के हैं, तो 2 पेज के हैं तो वो आपकी नोटबुक्स में कितने पेज होने चाहिए? मिनिमम 8 पेज तो हो ही जाएंगे। ओके, तो वो उसे अच्छी तरह लिखना, काट मत डालना बीच में से आंसर को। पहली लाइन लिखी, दूसरी नहीं लिखी, तीसरी लिखी। फिर ऐसा नहीं हो कि ऐसा हम एक लिस्ट पब्लिश करें कि ये स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा है, हम जानते हैं मगर हम पब्लिश नहीं करते, तो ऐसा मत करना। हाउ डिड वल्ली प्लान फॉर हर बस राइड, वो भी आ गया शॉर्ट क्वेश्चन में, वही आंसर आपको इलेबोरेट करना है। व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, वो भी आ गया, बस के बारे में क्या उसने ढूंढ निकाला।
Okay, that's all. That's only mixture of only 3 or 4 short questions that we discussed during the text. So दूसरा भी लिखना है। फिर तीसरा जो है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ऑफ वर्ली। ओके, ये नहीं लिखना है। ओके, फर्स्ट सेकंड, ये फोर्थ वाला भी हमने लिख दिया है, तो ये भी, मगर ये लिखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं क्यों से मैडम के बुलाते हैं। फिर 5 वाला नहीं लिखना है। फिर व्हाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, ये लिखना है। ओके, चलो ये आंसर दीजिए। व्हाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, क्यों वल्ली ने रिफ्यूज कर दिया बाहर देखने के लिए जब वो वापस आ रहे थे। वल्ली वॉज एंजॉइंग हर बस राइड, शी एंजॉयड द साइट सीन्स वेरी मच आउट ऑफ द विंडो, देन व्हाई डिड शी रिफ्यूज? Because she saw a young cow lying dead on the roadside. It was the same cow that she saw while they were traveling to the town. Perhaps some vehicle had struck the cow and now it was lying lifeless. The sight was so horrible and it was so frightening for Wally. फिर वो legs spread, eagle spreaded legs, वो सब description लिखना है। And that suddenly her happiness was turned into sadness and she refused to look out of the window, इस तरह से। And 7 answer है, what does Valli mean when she say I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge, ये भी लिखना है, ये नहीं लिखना है। चलो ये 7 वाला इम्पोर्टेंट है, कोई बता सकता है आंसर? What does Valli mean when she says, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? हम नहीं जानते तो भी जो कुछ हैपनिंग्स हो रही है उसके बारे में मैं आपके साथ एग्री हूँ, उसके रिलेटेड वल्ली क्या कहना चाहती थी? When Valli returned, she saw that her mother was talking with her aunt. They were talking with each other, but Valli poked her nose and told at one of the point that her mother was right and she agreed with her what she said about things happening, their knowledge. Valli agreed because she was thinking of the bus ride she had enjoyed without the knowledge of her mother. एक तो ये बात, ओके, उसकी मदर की विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर, उसकी मदर नहीं जानती थी तो भी उसने जो ट्रैवलिंग की जर्नी, एक तो वो, and second thing was she didn't know perhaps the difference between the life and death when she saw the dead cow, which was which was beautiful and loving just before minutes when they traveled to the town. She couldn't understand that one too. तो ये आंसर लिखना है 7। ओके, 6, 7, 4, 1, 2। आप होमवर्क की जो भी पीडीएफ भेजते हो उसमें आंसर्स इंक्लूड होने चाहिए एक्सरसाइज के। ओके, और मैं जो पीडीएफ भेजने वाला हूँ उसमें सारे एक्स्ट्रा आंसर्स है, लॉन्ग क्वेश्चंस 5, तो वो आप कर लेना। कौन से है वो देखने हैं आप लोगों को, 1 मिनट। सर हाँ बोलो। सर ये फर्स्ट नंबर में व्हाट वाज वॉलिस डीपेस्ट डिजायर के बाद का जो फाइंड द वर्ड वो भी करना है। 1 मिनट, ध्यान नहीं रखा बेटा, फिर से बोलूं मैं, 1 मिनट देख लेता हूँ। सर फर्स्ट नंबर में सेकंड वाला पार्ट ना, ये फाइंड द वर्ड्स वाला वो नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है, डीपेस्ट डिजायर वाला। ओके,
और जो मैं पीडीएफ में भेजने वाला हूँ वो ये आंसर है। डिस्क्राइब वर्लीज इंटरेक्शन विद द कंडक्टर, विद द ओल्ड जेंटलमैन, विद द एल्डरली रिपल्सिव वुमन। I have noticed that whenever I asking questions outside of the textbook, some students even not understanding what is being asked. वो यही नहीं समझते क्या पूछा गया, उसका मीनिंग ही नहीं पता है। Then how will they write answers? That's why I have given 5 extra questions here. ओके, पूरा आंसर है यहाँ पर। सेकंड है, डू यू थिंक दैट वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट राइड ऑन अ बस? गिव एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। तो अभी ये पॉइंट, ये सेंटेंस जो लिखा है, वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट राइड ऑन अ बस, उसके सपोर्ट में जितने भी इवेंट्स थे स्टोरी में वो सारा लिखना है। शॉप्स वाला, ग्लिटरिंग स्ट्रीट वाला, रोड्स वाला, काउ वाला, दैट एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड योर आंसर। Third one है, describing what Valli saw during her bus journey. How did the scenes and sights affect her? ओके, इसमें थोड़े जो पॉइंट्स है वो बढ़ेंगे आंसर के। और ये आंसर में कुछ भी पंक्चुएशंस की थोड़ी शायद, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, कुड हेल्प। ओके, यहाँ बीच में स्पेस नहीं है, ये मैंने बहुत जल्द में बनाया है तो कुछ मिस्टेक्स है, तो अपने आप इम्प्रूव कर देना। ओके, व्हाट वाज वॉलीज ऑब्सेशन? अभी ओनली इतना आंसर हो तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको ये पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज ऑब्सेशन क्या होगा, और वो लास्ट वाला सीन लिख दे, मिडल वाला सीन लिख दे। ओके, तो ऑब्सेशन मींस डीप डिजायर। ओके, वल्ली की डीप डिजायर क्या थी वही लिखना है। और इसमें थोड़ा डिफरेंट है आंसर, भले ही पहले आंसर में आप लिखने वाला हो तो भी ये लिखना। हाउ डिड शी प्रिपेयर एंड सेव मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी, और हाउ डिड वल्ली प्लान फॉर हर बस जर्नी, इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वन, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब वल्लीज रिटर्न जर्नी। और यहाँ पर आप भूल नहीं जाओ इसीलिए इंस्ट्रक्शन लिखी है, यू हैव टू राइट टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चंस योरसेल्फ। okay, and I am very much confident that you would surely write. If having doubt you can ask me, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लीजिए। एग्जाम रिलेटेड सर। एग्जाम रिलेटेड कितने मार्क्स आए तुम्हारे, बोलो। है नहीं थे ना? नहीं, हाँ सर उसके नहीं, वो तो अभी उसका तो मैंने कर लिया, मंथली एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मंथली एग्जाम आज 22 है, तो अभी तो हमारे कल भी लेक्चर आएगा और नेक्स्ट वीक भी आएगा ना लेक्चर। पर सर वो राइटिंग स्किल में आपने ईमेल ऐसे एक्सेट्रा वगैरह लिखा हुआ है, तो उसमें कैसे आएगा, मतलब कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन हो गए? सारे हो गए जो बोर्ड के एग्जाम में होते ना, लास्ट क्वेश्चन आपके संकल्प की एग्जाम में था ना, सारे क्वेश्चन थे ना उसमें इंक्लूड लास्ट में, इसी तरह से 80 मार्क्स जैसा पेपर। यस। मैं मुझे तो 80 मार्क्स का ही लेना है, जिससे आप लिखो थोड़ा कुछ, दैट्स वाई। क्योंकि आप लोग क्या हो, घर पर रह के बहुत लेजी बन गए। बहुत कम स्टूडेंट्स है जो अच्छी तरह होमवर्क लिखते हैं, पंक्चुअली, ऑन टाइम, परफेक्टली आ जाता है। बाकी देखते हैं, कुछ और लोगों की पीडीएफ रीनेम करके भेज देते हैं, ऐसे ही 7 लाइन्स का आंसर 2 लाइन में लिख के भेज देते हैं। दैट्स वाई कुछ लिखो, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। शायद जनवरी से स्कूल हो जाए स्टार्ट, ऐसा बोल रहे हैं, शायद हो भी जाएगी। ओके, मगर अब कुछ नहीं हो सकता, सिलेबस अबाउट टू ओवर। वॉट एवर यू हैव टू डू इज टू रिवाइज योर टॉपिक और टू sharpen all the knowledge you have about your syllabus. डेफिनेटली इंग्लिश में मार्क्स आएंगे, आई एम वेरी मच श्योर। मगर मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था ना, अभी मैं आप लोग तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट्स आर्ग्यू, सर इसमें क्यों 2 मार्क्स नहीं है, क्यों इसमें 5 आउट ऑफ 3 है। देयर आर लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्टार्टिंग इज नॉट प्रॉपर, एंडिंग इज नॉट प्रॉपर, बिगिनिंग पैराग्राफ इज रिटन विथ फुल ऑफ मिस्टेक्स। ओके, सो हाउ कैन आई गिव मार्क्स? सो अबाउ 60 के जाना है आपको, देन परफेक्शन होना चाहिए, देन 65 के अबाउ मार्क्स आएंगे आपके। ओके, अदरवाइज एवरीवन वुड स्टॉप एट 60 और 65 या 70, उसके पर जाना है, देन परफेक्शन होना चाहिए आपका। दूसरा कुछ पूछना है तो पूछिए एग्जाम के रिलेटेड। Okay, so let us end the meeting. You can leave the class. Thank you very much.